discussion with an amazing set of panelists, and I have the privilege of having Demo Ventures IDG, Aqsa Tariq as my co-moderator for this session. The entire NIC team is with us as well, led by our marketing team, Sana. She's also a big support of this entire exercise that we want to plan with our startups and at NIC. So our 6 panelists for today are, and I'll start off with a question for them as well, are Mr. Ali Mukhtar, the founder of Fatima Gobi Ventures, Mr. Aatif Awan, Indus Valley Capital. He's the founder of Indus Valley Capital, and we'll congratulate him on as well on the big news that we have heard in the recent 2 or 3 days. Then we have Mr. Rabeel Warraich. He's the founder of Sarmayacar. We have Arshad Ashraf, he's working closely with startups. 1 or 2 investments I know that he has made long years back. I was involved in one of the discussions as well. So Arshad is a private investor. We have Misbah Naqvi, who's very active with the Karachi ecosystem as well as the entire Pakistan ecosystem. We have the privilege of inviting her to NIC quite a few times, and she has helped our startups as well. She's with the I2I Ventures. Then we have Mr. Omar Parvez Khan, who's with High Output Ventures, and Omar has been a very good help for us, for our startups as well. So we have a powerful panel. And the first question that comes to my mind, and probably Aqsa will add her side of it as well, is हमारे पास बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं. We have the best news. Aatif साहब को मुबारकबाद बहुत ज़्यादा that he has launched a fund for early stage investing in Pakistan. With that, we have great news from the regulators' point of view, where State Bank of Pakistan is allowing money out of Pakistan as well, creating holding companies. जो हमारी सबकी problems होती थी startups की पैसे का deal making के बाद उस investment का आना जाना. So there's a great optimism as well as real hope that now many of the startups that usually could not scale because of lack of funding, they'll have more avenues. So this is my question to all of you. How do you see these developments, and especially starting from Aatif, if you like to share the idea behind launching this fund, and what do you see in the next year or so? So over to you, Aatif. Thank you. Thank you, Azfar, for having me and so many friends here. Good to see you all. So I feel that Pakistani startup ecosystem just in last 18 to 24 months, dynamic, the expectations, like they've completely changed. So early 2019, when all of us were either trying to raise our funds or helping our startups, it felt very uphill battle, especially when it came to people abroad, but even inside, skepticism, kafi pessimism in terms of, will things change this time, or will it be like similar early hopes that were dashed for one reason or the other? Or I feel that the last 2 years, what they have shown through multiple startups now raising significant capital, Airlift, Baikia, Finja, Bazaar, and many others, and a bunch of funds, local funds starting to have traction, making investments. So from my experience, with Indus Valley Capital, I was in Silicon Valley for the last 10 years, in the US for the last 15, recently moved back to Pakistan. What I felt was कि जो मैं uniquely value add कर सकता था ecosystem में, कि वहाँ का network को हम किस तरह से engage करें पाकिस्तान में, and how do we turn around this perception of Pakistan being somehow different from India or Egypt or these other markets that are doing well. So I feel, alhamdulillah, like that has turned around. Like when I had these conversations with people, it's not been a question, जो law and order की situation एक 5 साल पहले तक होती थी, that doesn't come up anymore. And there's excitement because it's a very large market. So with our fund, what we've been able to see is we targeted operators and executives at some of the largest tech companies. So हमारे जो fund के investors हैं in turn, they include people from
Facebook, Google, Coinbase, Stripe, these incredible companies, Instacart, where people want to work for, they add a huge validation. So when you have people in these companies with direct vested interest in Pakistani startup ecosystem success, that's a very, very positive thing that's happened. So super excited about that. And I feel like things are going to continue to get better. And we need to continue dreaming bigger and bigger, right? So जो हमारी mental limitations are because of past experience, we have to just give up on them and dream bigger and 10x this market. So on that note, thank you, Aswar. Aatif, what you've said, and usko I think I'll try to keep the conversation fluid and English and Urdu ka thoda hum mix जाएंगे because a lot of our audience, as NIC said, उन्होंने request की है कि हमारे sections जो हैं उर्दू में क्यों नहीं होते हैं. So थोड़ी सी request to all the speakers who are talking about the investment landscape in Pakistan. हम कोशिश करेंगे कि ये conversation जो है वो दोनों angles को cover करें. There's been a lot of dialogue on the venture capital ecosystem and investment ecosystem in Pakistan. And ab jaake, I think startups finally do have the understanding. They know better. Investors side, of course, they are people who've already either run businesses or have been in the industry for long enough to really understand this. Today's conversation we wanted to take is towards एक दफा आपके पास VC फंडिंग आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं या किस तरह आपको उसको नेविगेट करना है, किस तरह उसको मैनेज करना है. पिछले दिनों कुछ एक NIC के ग्रुप पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही थी on do not ask for $1 million when you only need 500 or when you only need $750,000. That's one thing that organizations, startups, businesses, they may over-evaluate or overestimate themselves. So if we could start the conversation on what is it really like and what's the kind of homework that startups need to do before they really, are eagerly accepting gobs of money without really knowing what to do with it. So Ali, if you'd like to go first, because I think you're a bit short on time. Sure. I think first and foremost, it's also important to understand that, the risk reward metrics early stage pay means that if you're giving away too much equity early on, you're for a smaller amount. So equity is more expensive earlier on, right? So that means that you, in your funding journey, you break that journey into Series A, Series B, Series C. Uski wajah yehi hai ke, if you knew, you could raise $100 million and that's what you need over a 7-year period, arguably you could do that, but then you're basically selling away all of your equity early on for cheaper, right? So I think that's important ke uski aapko samajho. And then each round is essentially de-risking the business, right? So Series A, you de-risk. As a result, investor return expectations would be different from seed investors, right? Then Series B ki return expectations alag hongi, Series C ki alag hongi. So that's the investor trying to see ke kis extent tak business de-risk ho gaya, right? Now, when you put that into the startup context, then you need to understand if I'm raising X amount of money, how much runway does that give me? And then what milestones can I, possibly reach with that amount of money, right? So seed ke milestones alag honge, Series A ke milestones alag honge, right? So and then industry wise, for example, e-commerce sector would have different Series A numbers or Series B numbers. Fintech would have different dynamics. So whichever sector you're in, trying to understand, right, whether this round takes me to the next milestone where I can raise the next round of funding, right, at the same time balancing the dilution part of it. So I think those dynamics are extremely important for startups to understand when they're going into the fundraise process, right? Early stage companies, the dynamics are around whether you found the product market fit, whether you found the right team, and then growth rounds it's about your growth, your path to profitability. So different metrics would be important at different stages of that life cycle. So you just have to understand
again, if you're raising $1 million, is that substantial for whatever sector you're in, or do you need less or do you need more? So I think that's, a quick overview. So as a follow up में एक question मेरे ज़हन में था और maybe Rabeel and Misbah ने आप लोग उसको अगर आंसर कर सकें. So अक्सर हमारी स्टार्टअप से बात होती है, hundreds of startups, we have incubated more than 100, और ये बड़ा कॉमन बात होती है, वो ये होती है कि अगर हम ई-कॉमर्स या रिलेटेड स्टार्टअप नहीं है या मोबिलिटी में या सर्टेन स्पेसेस में नहीं है, तो क्या हमारे आर वी एलिजिबल फॉर वीसी फंडिंग? अगर हम बहुत हाई इंटेंसिव रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप है, हम इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं, सो हमारे लिए क्या रिसर्च ग्रांट्स और ग्रांट्स हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट हैं, या वीसी फंडिंग हमें बाद में आएगी, एक ट्रैक्शन के बाद नंबर्स हम दिखा सकेंगे? रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप्स जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, दे हैव दिस कॉमन कंप्लेंट कि वीसी हमारी नहीं सुनते, उनको देखना होता है ज़्यादा ट्रैक्शन उनको दिखती है कि वो देखते हैं कितनी कार्ट वैल्यू कितनी है, क्या आगे कितने कस्टमर्स आ जाएंगे. वो अगर एक बहुत ही इनोवेटिव रोबोटिक्स पे काम हो रहा है या कहीं और हो रहा है, तो वो एक अक्सर हमें कॉमन कंप्लेन है कि शायद हम उनके लिए अर्ली होते हैं. सो should they when a company should approach any VC? So starting with Rabeel and then Misbah. जी, so thank you. Question का I think उसमें दो separate characterizations होती हैं और दो separate criteria के मुताबिक आपने देखना होता है. There's a set of businesses जिनकी profile कभी भी venture funding के लिए appropriate नहीं होगी, और उनके लिए अगर venture funding आ जाए तो then actually वो perverse से कुछ incentives create हो जाएंगे जिससे वो जो एक accelerated time frame के अंदर hyper growth target करना और एक वो 10x का return generate करना for a VC investor is just not feasible for some certain businesses. जहाँ तक रही बात उन businesses की that can eventually generate such a profile and an earning stream which could be very attractive but बहुत early हैं अपनी एक evolution में, वो I think it's just a different risk appetite के मुताबिक आपको VCs वो ढूंढने होते हैं. And there are VCs for example जो कि pharma के अंदर invest करते हैं and they take a certain view in terms of like both the success rates and also the time it takes for उस तरह की opportunities to materialize. I think Pakistan as an ecosystem is not necessarily at a stage where आप एक बहुत ही research oriented and many years before monetization के idea को आप fund कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपकी एक वो established stream of follow-ons उस तरह की नहीं है. अभी to be using a local word, जो दिखता है बिकता है अभी. And I think that's really where the obvious problems of which we have so many, उनको अगर कोई address करने के लिए opportunities आ रही हैं और वो large enough market को address कर रही हैं, तो I think उसके लिए channeling funding towards those to experiment on business model innovation rather than let's call it research driven innovation, वो अभी funding आपको available है और वो वाली आपको उसे demonstrate करना है कि आप एक पहले different problem solve कर सकते हैं, क्योंकि ultimately ये सारे risk elements हैं. तो I think सबसे पहली चीज स्टार्टअप्स को यही करनी चाहिए कि वो देखें कि जी उनकी जो बिजनेस है उसकी प्रोफाइल सूट करती है कि नहीं, and whether venture financing is the best form for that, and then once it's there, give वाली वो जो एक preconceived थोड़े से notion होते हैं कि जी अगर आप mobility में नहीं है या अगर आप एक दो सेक्टर्स में नहीं है, जी ये तो पुरानी बातें हो गई frankly. हम लोग जो VCs जो हम देख रहे हैं, हम we're not looking all, I think everyone pretty much on this panel is invested in the mobility startup already. अब हमने भी अपने सारे funds वो एक ही space के अंदर नहीं करने, so we are also looking for new spaces that are opening up और उसके अंदर कितने effective traction है, क्या उन businesses की capital requirement है आगे जाने में, because वो भी एक assumption बहुत जरूरी है कि जी all of a sudden आपको $100 million
कैपिटल की रिक्वायरमेंट वाली स्टार्टअप्स बनाने के लिए अगर आपको एवेन्यू नजर आ रहा तो आई वुड एक्चुअली नॉट परस्यू समथिंग लाइक दैट. इन फैक्ट आई वुड यूज ई-कॉमर्स एज एन एग्जांपल के बहुत मुश्किल है कि अगर आप यहाँ पे जनरलाइज ई-कॉमर्स का कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी उस तरह मिले, बिकॉज इट विल रिक्वायर सो मच कैपिटल गोइंग फॉरवर्ड, रेजर थिन मार्जिन्स, इधर आपकी कोई वो ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती, एज सच प्लेटफॉर्म लॉयल्टी कोई नहीं होती. 80,000 रुपए का फोन आप 50 रुपए के डिफरेंस पे एक बार दराज से खरीदते हो, अगली बार होम शॉपिंग से खरीदते हो. सो द पॉइंट इज के it's not as simplistic as saying कि जी इस स्पेस के अंदर फंडिंग नहीं है, इसके अंदर VCs नहीं देख रहे. We're covering all spaces, and now there's a lot more capital with Aatif's fund close as well. There is a lot of dry powder, but it's also not going to be directed into business models that are just not viable from day on. Maybe I'll let Misbah add to that. Yeah, you've kind of covered it, Rabeel. I think the only thing I would say is as far as के VC funding सबके लिए नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि just because you have a startup that you have to go for VC funding. There are many different kinds of funding that are out there. There is a path to VC also. You may start off with angel funding, you may start off with grants. But if that business has the potential to do the 10x and the multiples and that $100 million become the $100 million business that Rabeel mentioned, then yes, there is that path to getting to that. It doesn't mean that on day one, आपके पहले round में VC funding आपको raise करना ज़रूरी है. But if your business is not on that path, then VC will never be for you. और आपको फिर ये भी देखना चाहिए कि आप हमारी market में और options available hai. We do need more options. I will admit that in the market, we obviously already have some kinds of funders that are looking at grants, etc. There are business competitions, there are R&D kind of funders, but we need a lot more of that. And I think what we don't have right now is people looking at revenue-based financing, looking at debt, venture debt, because there are lots of other products that are also out there in more developed markets. But that also brings us back to what Rabeel was saying, कि we also have to see कि हमारी market कहाँ पे है आज, और हमारी market इस अपनी growth के इस early stage पे है कि अभी बहुत ज़्यादा specialized funding भी आपको available नहीं मिल रही. Inshallah, another 5 to 10 years, you start seeing funds that are focused on verticals. There'll be only fintech fund, there'll be only mobility, there'll be only e-commerce, there'll be etc. So we're not at that stage. Most of us who are here today are investing across the board on different kinds of companies. But I think one thing that I will say is common, and that's something that your founders can self-select also, is that what role is technology playing in your startup? And if you look at the Valley, or if you look at Indonesia and you look at similar markets to Pakistan, tech-based businesses have a lot more potential to grow very fast. Some require capital given the market dynamics, some don't require that much capital, but they have the ability to grow fast because there's a tech component, and Pakistan is very uniquely placed to leapfrog a lot of those developments that we don't have to go through that some of the more developed markets went through. So we have that opportunity, and that's why most of us here, I don't want to speak for everybody else, but I know that there's a common feature here, which is we're excited about tech-based models that can grow. चाहे वो mobility में हो या e-commerce में हो या fintech में हो. And like Rabeel said, these are evolving. I mean, look at the opportunities that Pakistan presents. So rather than focus on something that's very, very, very niche, that you're looking at a very particular sort of medical biotech, which requires a lot of R&D, there's a lot more problems that need to be solved, where the question is about like, how do you actually solve those problems, and less about like, कोई नई चीज निकालें जो किसी ने कभी सुनी नहीं हो, और ऐसा जरूरी नहीं है. हमारी मार्केट में अभी saturation point बहुत आगे है. अभी we're not at that stage yet. I think so. उसके example को इस तरह जोड़ सकते हैं कि when the government of Pakistan decided कि Ministry of Science and Technology ने invite किया लोगों को कि वो ventilator बनाएं, तो उसमें यही problem हुई कि जब local innovation से जिसने 4 design जो shortlist भी हुए, वो भी drug regulatory authority की पहुंच तक या उस तक जब पहुंच भी गए तो वो fit नहीं थे to be commercialized, to be viable. Probably जो आप लोग यही बताना चाह रहे हैं कि innovation या research के उस level से पहले business model innovation is, like Rabeel mentioned, is very important. So, I'd like to add on to what Misbah and Rabeel have said, and especially because you bring in a regional perspective as well with Saudi Aramco, and you've been looking at investments, different kinds, especially in Pakistan as well. How would you say, and I think Eye2Eye, has been there for 10 years, and then they sort of ventured into the investment side of things.
how do you say the Pakistani startup ecosystem and investment landscape has taken shape? And as Misbah said, the next 5 to 10 years look more promising, where we sort of diversify kitne hum aur verticals mein ya vertical specific. And Omar, then I'd like you to add on, because I know that you've been working, a lot of the work that you do outside of HOV is also about, training startups to become financially ready to sort of take that next big break. So Arshad, if we could start with you. Aqsa, thank you. Thank you for inviting me to this conversation. पहली बात तो ये कि I think there are a lot of people here. I'm very excited to see them. It's been almost a year since I've really interacted on the ground with the venture capitalists, but it's super exciting to see so many people raising funds and the ecosystem growing. तो जो local perspective है वो तो आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं जो provide कर सकेंगे. मैं थोड़ा सा आपको एक global perspective देना चाह रहा था that might be pertinent to our discussion, which was actually Azfar's initial question कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारी उसमें क्या context है. तो देखिए पहली चीज ये है कि capital formation बहुत important एक चीज होती है, और वो capital formation जब countries अपनी stock market को देखती हैं जहां हमारी equity markets होती हैं, वो उधर सबसे पहले capital आता है. कैपिटल जो है आपकी स्टॉक मार्केट पे इसलिए आता है क्योंकि इजी होता है. आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हूं, मैं आ सकता हूं, मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं. और अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप देखें इन पाकिस्तान, इट्स ओनली $70 billion इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. बांग्लादेश इज नाउ क्लोज टू $80 billion, इंडिया इज 1.7-1.8 trillion. तो क्योंकि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन जो बहुत हमारी जो बिगेस्ट मार्केट है, पब्लिक मार्केट है, उसमें ज्यादा नहीं हुई, तो हमारा अटेंशन नहीं है. ग्लोबली हम लोग विजिबल नहीं होते फॉर इन्वेस्टर्स. तो उससे उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जो नीचे की जो चीजें होती हैं जैसे प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल है, वो इंडस्ट्री में फिर पैसा नहीं आता. क्योंकि अगर आपकी टॉप जो बड़ी मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, उसमें अगर पैसा नहीं आ रहा तो इट डजंट ट्रिकल डाउन effectively. So the most exciting thing that's happened is that now we have alignment. We have the SECP, we have the State Bank of Pakistan, we have mechanisms by which the local startups can really find a path to exit, as well as tap into the equity markets and for the equity markets to grow. अगर वो equity markets grow करना शुरू हो जाएंगी, automatically सबको पता चल जाएगा यार पाकिस्तान की मार्केट ऊपर जा रही है, we should pay attention to it. And then people come and pay attention to the public stocks, then they pay attention to the private stuff, and then they pay attention to venture capital. So I just wanted to explain that concept. एक तो ये हो गया. दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखें, एक जो बहुत बड़ी चेंज आई है, जो कोविड ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको एक्सेलरेट किया है, वो इशू ये है कि देखें कैपिटल वाज फंजिबल. कैपिटल तो आप कहीं भी लगा सकते हैं. ग्लोबली मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं आरामको के पैसे मैनेज करता हूं, मैं कहीं भी दुनिया में इन्वेस्ट कर सकता हूं. मगर लेबर जो है दैट वाज नॉट फंजिबल, वो मूव नहीं कर सकता था. ठीक है ना. तो अब टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग अब जूम के ऊपर हैं, हमारा लेबर जो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी जो स्किल सेट है उसको हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं. तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आई वुड से एडवांटेज है इज आवर डोमेस्टिक साइज एंड इकोनॉमी, द नंबर ऑफ पीपल, द डेमोग्राफिक्स एंड जस्ट द साइज एंड द नंबर ऑफ पीपल. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन वेयर outside investors look at it and say यार ये 5th 6th most populous country है, इसमें कुछ पैसा ही नहीं जा रहा, इसमें कोई opportunity होगी. तो I think कि ये angle एक हमारे लिए बहुत important चीज है. देखिए capital is a commodity. What we really want to look at is to find great talent, and I'm super excited कि भाई इतना venture capital में हो रहा है, funding हो रही है. So I think this is a great step forward. Thank you very much. I think that was very sort of in a layman's term, you really explained, कि VC funding के लिए जो preparation, not just for the startup, but also for the economy. And I think some of the people sitting here are responsible for really driving that with the regulators. Omar, if we could hear from you on, as I was saying, a lot of the work that Omar does with HOV and other than HOV as well, has been with sort of preparing startups to becoming financially ready. If we could have your comments on, the Pakistani startup ecosystem, the investment landscape, and of course, what HOV is doing particularly, because that's also sort of like a global interest. Yeah, thank you, Aqsa. So HOV High Output Ventures is a venture studio based out of Singapore. And yeah, it's most of our investments are in Southeast Asia.
We made, but 2020 was our first experiment with Pakistan, you can say it. We launched an accelerator where we gave 3 startups funding. So we did 4 deals in 2020. 3 of them were in Pakistan, one was in Vietnam. So you can say 2020 mein hamara focus Pakistan tha, because we think the opportunity is exciting. As for me, bilkul, I've been working with startups since 2015. As I twice ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी स्टार्टअप्स को थोड़ी फाइनेंशियल रेडीनेस में हेल्प चाहिए, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पहले था अकाउंटिंग में, तो I went in and I started working with startups on their finances. तो डेफिनेटली जो हम अभी सारी बात करें कि जो शिफ्ट आया है, आई थिंक लास्ट 2 years में तो एक्सेलरेशन हुई है, पर 2015 से ही अभी से लेके इफ़ यू सी कि कितनी नॉलेज अब स्टार्टअप्स के पास है, फाउंडर्स के पास है अबाउट वीसी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लाइक 5-6 years ago इट वाज लाइक वीसी फंडिंग भी कम थी, तो उसके बारे में नॉलेज भी कम थी. और एक जो मसला है यहाँ पे, and Misbah I think touched on that, is that there are not a lot of avenues for funding for startups outside of VC. तो होता ये है कि हम जो सारी बात कर रहे हैं, और मैंने over 5 years देखे, हम जो सारी बात कर रहे हैं कि what does it mean to accept VC funding, या कुछ businesses जो होते हैं वो VC funding के लिए नहीं होते हैं, पर होता ये है कि यहाँ पे बंदा जो कोई भी founder startup एक कंपनी बनाती है या बनाता है, एंड उस पर जो भी है थोड़ी सी ट्रैक्शन जमा होना शुरू हो जाती है, और अब उसको ग्रो करने के लिए, बेशक वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस ग्रो कर रहा हो, उसको ग्रो करने के लिए उसको अब थोड़ा सा कैपिटल चाहिए. अब मसला ये है कि अगर वो वीसी फंडिंग की तरफ नहीं जाएगा तो उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. बहुत कम मॉडल्स होते हैं जो सूटेबल फॉर ग्रांट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका मॉडल ग्रांट्स के लिए नहीं सूटेबल होगा. आपको ऐसा एज अ 2-3 लोगों की कंपनी 4-5 महीने 6 महीने हुए हैं स्टार्ट हुए, आपको लोन नहीं मिलेगा. 4-5 का यहाँ पे इस्टेब्लिश कंपनीज को लोन नहीं मिलता. तो होता यह है कि वो थोड़े से ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स वीसी फंडिंग, क्योंकि उनको वही ऑप्शन नज़र आता है, और फिर वो उसी बिजनेस को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको हम वीसी टाइप बना देते हैं. तो मसला ये आता है कि अगर उनको वीसी फंडिंग मिल भी जाए, एक तो मिलती नहीं है फिर, एंड वो अपना बिजनेस का जो भी है वो शक्ल चेंज करके आ चुके होते हैं, और फिर भी फंडिंग नहीं मिलती, तो वो बिजनेस वहीं थोड़ा स्टैग्नेट कर जाता है. और अगर उनको मिल भी जाए तो उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि वीसी फंडिंग मिलने के बाद क्या होना है और हमसे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. वो बना तो देते उसको वीसी स्टाइल, पर वो उसको इंटरनलाइज नहीं सही तरह करते, तो उसके बाद उनको लगता है कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो मैं बनाना शुरू कर रहा था. और वहाँ पे भी मसले आते हैं. तो मैं फाउंडर्स को यही एडवाइस करता हूँ कि वीसी फंडिंग में आप 4-5 वेरी सिंपल चीज़ें हैं जो आप अपने लिए अपने जहन में रखें कि आपने अगर वीसी फंडिंग लिया तो आपकी टॉप लाइन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है. और जो आपने रिसर्च की बात की, ये की वो की, ठीक है, अगर आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीसी फंडिंग आपको मिल जाए तो आपने कुछ कर सकोगे, क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग ड्यू डिलिजेंस या एनीथिंग इन्वेस्टर्स को बताओगे वो आपकी टॉप लाइन से रिलेटेड होंगे कि आप कितना ग्रो कर सकते हो, कितना तेज ग्रो कर सकते हो. नंबर 2, आपने ये देखना है कि आपको डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस अभी कितना है, आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एटलीस्ट 5-7-10 years, आपको मॉनेटरी बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करे थे. अगर आप एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस के लिए जा रहे थे तो आपने सोचा होगा यार मैं बिजनेस को इतना ले जाऊं, 10 लाख पे ले जाऊं, 20 लाख रुपए पर मंथ मेरा आ रहा हो तो बस ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. पर जब आप वीसी फंडिंग के लिए जाएंगे तो वो सारा आपकी टॉप लाइन पे फोकस है, सारा ग्रोथ कैपिटल है. तो होगा ये कि आप यू हैव टू नो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव टू मेक मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस. प्रॉफिट टेकिंग तो इम्पॉसिबल है. सैलरी भी आपको मार्केट से थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यू आर taking a risk as an entrepreneur, and as an entrepreneur you are taking a leap. So that's one of the things that is attractive for investors in entrepreneur. और तो आपने ये देखना है कि आपको इंशाल्लाह कभी एग्जिट तक पहुंच गए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर ड्यूरिंग दैट जर्नी कैन यू सस्टेन योरसेल्फ कि आपने थोड़े से मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस करने होंगे. जो आप बिजनेस बनाना चाह रहे थे रेवेन्यू जनरेटिंग, वो नहीं होगा. तीसरी चीज़ इसमें होगी कि आपने इन्वेस्टर के साथ अलाइन करना है. यू कैंट केयर टू मच अबाउट योर बिजनेस. और ठीक है, हम कहते हैं कि बिजनेस में पैशन होना चाहिए फाउंडर का, तो बहुत अच्छा होता है, और पर इतना ना हो कि आप उसको छोड़ना ना चाहें. और मैं एग्जिट की बात नहीं कर रहा, मैं ड्यूरिंग द जर्नी की बात कर रहा हूँ. अगर आप एक स्टार्टअप है और आप वीसी फंडिंग रूट पे चढ़ गए, अब आपने एक्सेलरेट करना है, आपने सिर्फ अपनी रेवेन्यू बढ़ाते रहना है. ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका रनवे थोड़ा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि थोड़ा कम रह गया और आपने अगले राउंड के लिए जाना है. पर ड्यूरिंग दैट राउंड या आप स्लो डाउन करें और बिजनेस को बचाएं,
या आप एक्सेलरेट ही करें और कहें पैसे मिलते हैं तो ठीक है हम जिंदा रहेंगे, वरना बस ठीक है खुदा हाफिज। क्योंकि अगर आप वहाँ स्टैगनेट कर जाएंगे और आप ज़ॉम्बी कंपनी बन जाएंगी तो आपको अगली फंडिंग नहीं मिलेगी और आप एक वेंचर टाइप बिजनेस एक लेवल पे चला रहे होंगे और उससे कोई पैसे नहीं कमा रहा होगा, ना उसमें कोई प्रॉफिट आ रहा होगा, बस एक लेवल पे चल रहा होगा। तो ये तीसरी चीज़ है कि आपने इन्वेस्टर से अलाइन करना है। इन्वेस्टर सिर्फ ये नहीं देख रहा कि एग्जिट का है, राइट। तो यहाँ पे सारे फंड मैनेजर्स हैं, स्पेशली फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो उन्होंने एक फंड रेज किया, उन्होंने डिप्लॉय किया, उन्होंने सेकंड फंड रेज करना है। सेकंड फंड तक उनका कोई एग्जिट होगा नहीं होगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्ली नहीं होगा, तब तक वो डिप्लॉय कर चुके होंगे, सेकंड फंड रेज करे होंगे। तो उनका जो की मेट्रिक उनकी परफॉर्मेंस देख रहा होगा वो मार्क टू मार्केट होगा, जिसको फेयर वैल्यू कहते हैं, कि हमने अभी जितने पैसे जिन कंपनीज में डाले हैं उनकी अब वैल्यू कितनी है, राइट। तो आपने भी जो शुरू में आतिफ ने भी कहा था कि जो आपने जर्नी मैप करनी है अपनी, आपने इस तरह मैप करनी है कि आप कहो यार मैं अभी ये प्री सीरीज है या सीड राउंड फंडिंग ले रहा हूँ, सीरीज ए तक मैं इतना बड़ा राउंड करूँगा, ये करूँगा, तो मैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, फंड मैनेजर के लिए भी ये मार्क टू मार्केट जनरेट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अलाइन नहीं करते इन्वेस्टर्स के साथ तो और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती फाउंडर्स को इसकी शुरू में, तो इसलिए वो आपको मिल भी जाए पैसे तो वो मसले होते हैं, और वो लाइक ऑनेस्टली शुरू में मिलना भी इम्पॉसिबल होता है। जी, I think thank you. this has to be sort of like a financial capital investment. It's an economic arrangement. It's not just startups piggybacking on these investment opportunities that come through these VC funds. If I can have Aatif and Rabeel sort of add in, Pakistan did see a boom back in 2000 when the first sort of internet startups really came about. There was investment available back then as well. What do we do this time around to really get it right? Even in the past, in the recent past, we've seen that startups have raised funding, but unfortunately, due to like various circumstances, it hasn't really sort of panned out really well for them. अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि from the VC side, like from your end as well as from the startup side, ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि companies जो हैं जिनमें invest किया जा रहा है technology startups particularly, how do they end up surviving even after they take the VC funding in? अच्छा, I can go first and then Rabeel, feel free to chime in. देखें जो पहले वाली examples हैं उनकी बड़ी specific reasons थी. So late 90s, yes, Pakistan's economy benefited, काफी capital है, more traditional side, not technology startups. But we all know कि 9/11 की वजह से पाकिस्तान के 15 साल जो है हम दुनिया से disconnect हो गए, global capital नहीं आया, उसकी वजह से हमें काफी loss हुआ है, वो आपके control से बाहर है. फिर जो 2010s में कुछ स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट हुई इनिशियली, उस वक्त मार्केट तैयार नहीं थी, आपके पास इंटरनेट यूजर्स बहुत कम थे. 2013 में भी सिर्फ 3 मिलियन मोबाइल इंटरनेट यूजर्स थे, तो फंडामेंटल्स नहीं रेडी थे, वो सब है. और कैपिटल जो है दुनिया में वो बहुत फंजिबल है, इजीली फ्लो करता है अक्रॉस ग्लोबल बॉर्डर्स, पहले से बहुत ज्यादा. तो उस लिहाज से हालात कभी इतने साजगार नहीं हुए. अब हमें करना क्या है? करना ये है कि आपको आपकी रीजंस ठीक होनी चाहिए, आप किस वजह से कर रहे हैं. आपको स्टार्टअप इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि कूल है, आपको स्टार्टअप इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि बाकी लोग कर रहे हैं. अगर आप एक प्रॉब्लम, एक मसला है जिसके बारे में आप केयर करते हैं, आपको एक बहुत अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि एक कोई नया तरीका है किसी चीज के करने का, और उस प्रोसेस में आप मुल्क की इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को चेंज कर सकते हैं, उसमें तब्दीली ला सकते हैं, वो सही वजह है. अगर आप वो करेंगे तो आप लोकल कैपिटल सीड स्टेज पे जो सबसे बड़ी हर्डल होती है वो इतना अवेलेबल है कि वो आपको मिल जाएगा. फिर जो स्क्रीन पे लोग नजर आ रहे हैं ये ग्लोबली बड़े वेल कनेक्टेड हैं, और डिफरेंट, जिस तरह से यूएस में मैं रहा, रबील यूरोप में रहा, बाकी लोगों ने अपने काम के थ्रू कनेक्शंस बनाए, अरशद साहब बहुत ग्लोबली कनेक्टेड है, सभी लोग, तो उनके थ्रू आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, नेटवर्क भी मिलेगा, तो फॉलो ऑन कैपिटल भी आ जाएगा. लेकिन आपने अपनी विजन से ट्रू रहना है, सबसे ज्यादा अहम चीज है, और सीखना सबसे है, लेकिन चीजें आप अपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बेसिस पे करें, जो आपके बिजनेस के लिए सेंस बनती है, उसमें लॉन्ग टर्म विजन क्या है. तो आप जब स्पेशली फंड रेजिंग के हवाले से जब आप एक राउंड रेस कर रहे होते हैं तो आपको अगले राउंड का भी सोचना होता है, उससे आप डिटरमिन करते हैं कि आपको कितना रेस करना चाहिए, क्योंकि अगले राउंड में आपको बिजनेस को एक सर्टेन लेवल्स पर लेकर जाना है, उस हिसाब से आप कहें. अभी एक चीज जो मार्केट में नजर आ रही है, जो सब फाउंडर्स के लिए काफी जरूरी है,
कि वो हेडलाइंस देख के लोग डिसाइड करें कि उन्हें कितना रेज करना है। तो अभी कुछ स्टार्टअप्स ने $1 मिलियन राउंड सीड राउंड रेज किए हैं, तो हर स्टार्टअप जो है वो डेक में $1 मिलियन लिख देते हैं, एंड उसकी कोई वजह नहीं होती उनके पास समझने के लिए, उन्हें अभी इतना कैपिटल भी नहीं चाहिए। तो आपको खुद से सोचना है कि आपके लिए क्या चाहिए, प्रेस्टीज की वजह से नहीं करना आपने, ठीक है। तो आई थिंक कि सबसे अहम चीज यही है कि आप अपने उसमें इन्वेस्ट करें, सीखें, हैव द राइट रीजन टू डू दिस, और उस पर तवज्जो दें। बाकी सब कुछ आपके अराउंड अब चीजें बहुत डिफरेंट हैं, और वो सब कुछ इन टाइम आपके पास आ जाएगा, तो आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगी। आतिफ ने सॉरी आतिफ ने बहुत अच्छी तरह कवर किया है। आई थिंक जिस मेरी नजर में मैं सम अप करूंगा द प्रीवियस वेव और अभी वेव के दरमियान में जो एक हम वो टर्म यूज करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, थिंक ऑफ दैट एट द पाकिस्तान लेवल. Pakistan wasn't ready for such investment to kind of flow in. Why? क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज तो ऑब्वियसली आपको पता थे, 2014 के बाद से ज़रब अज़ब के ऑपरेशन के बाद से जो इम्प्रूवमेंट आई है, अगेन इवन इन नंबर्स वी डाउन लाइक व्हाट 80-90% उससे। फिर आप उसके बाद देखें we're in our third consecutive civilian to civilian transition of power. उससे पहले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था जीरो, quite literally. फिर आपकी पूरी जो डेमोग्राफिक की एक स्टोरी है, लाइक यू नो वेयर दिस इज अ कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी जो कि डिजिटल सोर्सेज पे मूव कर रही है। अभी आपकी मीडियन एज 21 साल कुछ महीने है। now you finally have 80 million smartphone users, and so basically वो जो consumption patterns हैं हमारे वो डिजिटल सोर्सेज पे मूव हो रहे हैं। people like me like use Uber, Careem, order food on Food Panda, buy medicine online on the Vibe. That's really what is kind of like, you know, driving a lot of this immediate opportunity जिसके ऊपर capitalize किया जा रहा है। और अब क्या हो रहा है, formalized, structured, properly governed structures मिल रहे हैं लोगों को to invest via as well. So what these funds represent are effectively that avenue, that channel जिस अर्शद ने पहले बात की थी कि यहाँ पे वो formalized जो एक listed market की एक होती है avenue, वो private markets में उस तरह नहीं होती, but there are other forms which provide access to a particular market, और वो अब पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। And adding on top of that is थोड़ा सा एक ये वापसानी effect, which is के people who have made some capital, been successful outside, वो पाकिस्तान अपने साथ अपना capital भी ला रहे हैं, expertise भी ला रहे हैं, so now whatever they're then setting up locally, उसमें और लोग भी ज़्यादा train हो रहे हैं। So that this is what I would say. और वो real estate के अलावा भी पैसे डाल रहे हैं। Exactly. So ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा, पर basically the point is कि ये सारी flow और avenues अब open up हो गए, and that is creating a certain momentum. And this is where the second point that Aatif also raised, which I completely agree with, कि ये एक वेंचर फाइनेंसिंग का भी कंटिन्यूम होता है। आप एक राउंड के लिए नहीं सॉल्व कर सकते, और अगर आप एक राउंड के लिए सोच भी नहीं सकते, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इज कि यार किस फाउंडर ने वो 10 राउंड के आगे का सोचा हुआ है और वर्किंग टुवर्ड्स दैट। वी रिकॉग्नाइज कि हम जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी में, वी डोंट वांट टू सी आवर इन्वेस्टमेंट गो डाउन टू जीरो इमीडिएट, राइट? लाइक तो अगर वो 6 महीने के रनवे के साथ हम अगर फंड कर रहे हैं, तो दैट मींस कि 6 महीने के अंदर that company really needs to, like, you know, either become profitable and not need cash, which is never going to happen, or it needs to have a plan figured out. A plan meaning कि आपको समझ है कि आपके अपने ही बिजनेस में आगे जाके क्या जरूरत होगी, आपको किस किस्म के वो फाइनेंसिंग पार्टनर्स के साथ एंगेज करना है, किस तरह एंगेज करना है। नाउ फर्क ये है अभी और 20-15 साल पहले में कि अब बहुत ज्यादा टूल्स और सपोर्ट है ये करने को। आतिफ ने नेटवर्क्स की बात की, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑफ having invested in other markets and other similar kind of like, you know, situations, तो अब वो काफी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, नेटवर्क भी बन गया, एवेन्यूज बन गए हैं, लाइक ब्रिजेस बन चुके हैं to these other more mature ecosystems for both expertise, capital and so on. तो अब हमें ये करना है कि we need to stay also honest to that and localize that understanding, meaning कि अगर एक कंपनी $100 million के पास के बाद बनी है सिलिकॉन वैली में, क्या उसकी रियलिटी, उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स और एक्सेस टू फाइनेंसिंग सेम है पाकिस्तान में? अगर नहीं है तो then that is unlikely to be successful.
तो इसलिए हमें ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ फाउंडर्स एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स, कि हम एक वो लोकल इकोसिस्टम के मुताबिक, एंड as much as we're growing very quickly और numbers भी बहुत बड़े हो रहे हैं, we need to keep in mind कि unfortunately शुरू में वो 5-7 कंपनीज ही होंगी जिसके अंदर ज्यादा बल्क कैपिटल जाएगा और जिनके सक्सेसफुल होने के वजह से फिर बाकी आगे इकोसिस्टम बनेगा। मैं ये इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि it's unfair on other startups that might miss out, but that's because like every ecosystem has evolved in a similar way, and ultimately वो जो numbers जो बड़े होते जाते हैं वो we want to translate that from individual startups to much wider base across the entire ecosystem, and I think that's at a very critical juncture right now. So on that note, can either of you tell me, is there really like a fail safe for a VC? We do know that startups अपना थोड़ा सा fail safe रखती हैं, वो pivot कर सकती हैं, वो कुछ और कर सकती हैं. VCs के लिए वो क्या होता है? And Misbah wanted to, I think so. Anyone can take this. I mean, it's an open question. Well, I was actually going to add something to what Aatif and Rabeel were saying in terms of the evolution of the ecosystem, because through Invest to Innovate, we've been in this space for the last 10 years. One of the major things that also happened is the change in the kinds of founders that we're seeing now in the startup ecosystem. So, we go back earlier, we saw more junior founders. Like, I'll give you an example. We've invested in a company called TeleTalk. These guys have been working together for almost 15 years now. They're on their third startup. So that kind of maturity, those kind of mature founders means that they're coming in with a lot of knowledge about, and how they're building the company is benefiting from all of that. So there are these mature founders now that we're starting to see more in the startup space, people that have had other experience with startups or have worked in corporate or some other field, which are now coming in, and they're not fresh university graduates. Not that there's anything wrong with that, but there's a certain amount of experience that they're bringing to the table. I think the other thing that we can't discount is the Kareem effect in our region. So Kareem has had big exit. Not only does it actually serve two purposes. One, it's inspired people. People have looked at Mudassir Sheikha being Pakistani and saying hum bhi kar sakte hain. Seeing peers in this space who have had relatively great experiences with Kareem, saying great, if they can do it, so can I. But then the other thing is knowledge. There's actual knowledge transfer that is happening because people have been at a fast growing startup like Kareem and now are actually bringing that in. So to Rabeel's point earlier, there will be a few companies that will make it big. But then the sort of domino effect of those few companies will continue to push the market forward. And we're going to see more and more of that happening now, I think. Sorry, Aqsa, that was not the question you were asking, but I just wanted to add to what Rabeel and Aatif were saying. So if you want to maybe ask your question again, me or somebody else can answer. Was more on the generic side that, everybody talks about the safety net for startups and, they always have you guys or like general, industry or the ecosystem that's really like their fallback on. What happens with the VC? Is there a fail-safe for a VC as well? Maybe I can just quickly answer that because I allocate capital to venture capitalists. So what they do is they just go and start another fund. I mean, there are funds that fail and then they start another one. So it's just like another startup. But I just wanted to chime in on a couple of points here, Aqsa. Pehli baat to ye ke Rabeel, you have the trademark on Wapistani. I heard it from you first, and you should take full credit for that. देखिए, I think कि अगर एक प्रॉब्लम है और एक एंटरप्रेन्योर की डिटर्मिनेशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वो प्रॉब्लम बड़ी है और आपके पास सोल्यूशन है, तो दुनिया में बहुत पैसा है, ठीक है ना? पैसे की कमी नहीं है. मनी इज अ कमोडिटी, राइट? पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि पैसे के पास ज्यादा पावर है और जो स्वेट एक्विटी है उसके पास कम पावर है. फाइनेंशियल एक्विटी एंड स्वेट एक्विटी का बैलेंस जो है ना वो अभी भी फाइनेंशियल एक्विटी के हाथ में. दुनिया में ये बैलेंस चेंज हो गया है, ठीक है ना? The real power is in the hands of the sweat equity, people who have real knowledge and can actually create disruption. तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी एक प्रॉब्लम बड़ी है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं और इफ यू आर कन्विंस्ड आपकी एक ऑथेंटिसिटी है, ये नहीं कि भाई जैसे आतिफ ये कह रहे थे, राबील ने भी कहा कि भाई
you're just doing it for the sake of doing it. I think Omar also mentioned this. You're authentic about solving the problem. Raising money, raising capital around it, etc., will all come about. But as long as the problem that you're solving is large enough and the solution that you have is compelling and that you're determined to be able to solve that problem. So ये situation जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए. एक last point मैं ये कहूँगा कि देखें, हालांकि पाकिस्तान के ecosystem में we have seen a lot of development. Unfortunately, we're still getting left behind from what's happening globally, because in the global setup, technology is accelerating. It's exponential. The growth is exponential. So until unless we don't have the Kareem effect that Misbah was talking about, it's going to become really difficult for us to catch up to the rate of change that's taking place overseas. So I have a suggestion for all the venture capitalists in this session, that we need to get together. And I know it sounds very idealistic, etc., but let's create champions together, because if you do that, it will accelerate the ecosystem if we work together. Doesn't mean that you need to come into every single deal, but we should be talking about deals and saying, yeah, how do we solve this big problem? If we can put our capital, our connectivity, our experience to solve this problem with the right team and create a large enough company, a compelling company, that will make the ecosystem explode in terms of interest. So we need that kind of a creation of an entity that can get the global response. Like people can look at it and say, हाँ यार ये पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी बनी है, जैसे करीम का नाम है. करीम एक छोटी कंपनी है, मगर if we can manage to do that instead of doing our own thing, which is also fine, but it takes a longer bit of time, I think that would have a huge impact. Sorry, Aqsa, आपने पहले वो question किया था, and Arshad kind of like made the point very well about अगर funds fail हो जाएं तो like you can go out and try to raise another fund, and like there's plenty of capital going around. पर एक काफी different है जो कि I've realized कि पाकिस्तान की market में भी इतना नहीं समझा जाता from a founder perspective. One of the primary differences के एक जो founder है ना, उसके सारे eggs एक basket में, which is around one startup. If any of our funds is linked directly to one startup in the same way, then we haven't done an effective job of managing our funds or investing our funds, right? So ये बहुत key difference है कि while we are betting on the same like success of those underlying startups, हमें एक थोड़ी सी diversification और एक portfolio effect create करने का एक बहुत important consideration होती है, which basically is also the reason कि जब हम price करते हैं हर investment को, और वो जो हम 10x और वो सारी बातें कर रहे होते हैं, it's because के failure rate is so high even in our selection and the execution risk involved and the various different risks involved in a startup success में, if 9 out of 10 fail, the 10th one gives a 10x return, so you just basically returning your capital. That's at a very high level, what the kind of return considerations are. So वो भी एक when startups are approaching VCs, उनको वो ज़हन में रखना चाहिए कि why is it that we're looking for a type of return? Because the risk is high, and we need to also we raise these funds with the promise of generating a return for our investors, investors like Arshad. And if we don't generate returns, तो वो अभी कह तो रहे हैं कि हम एक और फंड रेज कर लेंगे, पर वो फिर देते नहीं है पैसे. तो इसलिए ये कि हमें भी successful होना होता है by both managing, diversifying, and also facilitating growth of underlying startups. मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पता नहीं वो कितना सही है. वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स एंड हम उनका एजेंडा भी पुश कर रहे होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी पुश करते हैं. आप लोगों से आपका लिए सवाल है कि पाकिस्तान में गिवन द एटीट्यूड ऑफ द रेगुलेटर्स, जो कि अब बहुत बेहतर हो रहा है, SECP, SBP, FBR रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, आप लोग एज VCs ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एक तरफ स्टार्टअप्स हैं, एक तरफ जैसे अरशद बात कर रहे थे जहाँ स्वेट कैपिटल की बात है, जहाँ आइडियाज़ की बात है, वहाँ आप लोग हैं जो पैसा लाते हैं उस बिजनेस में, उसको स्केल करते हैं, बढ़ाते हैं. आप लोगों के मेन कंसर्न्स क्या हैं
आप लोग क्या चाहते हैं कि जिससे आप लोगों का भी बिजनेस, फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर यू गाइस इम्प्रूव हो जाए? किस तरह ये आप लोग क्या देखते हैं? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? क्या ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा इकोसिस्टम एंड स्पेशली वीसीज जैसे आतिफ आए हैं अभी और आप लोग हैं मार्केट में एक टाइम से, तो आप लोग क्या देखते हैं? व्हाट डू यू प्रपोज, स्टार्टिंग विद उमर एंड देन आतिफ और आप लोग? लेकिन जहाँ तक रेगुलेटर्स हैं तो डेफिनेटली ये जो सारी एसपीपी वगैरह की चेंजेस आई हैं ये वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बहुत सूट करती हैं, क्योंकि काफ़ियों के जो फंड्स होते हैं और एलपीज होते हैं दे आर इंटरनेशनल एंड दे प्रेफर, स्पेशली जो होल्ड को वगैरह स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आसान किया। मुबारिस का बहुत काम है उसमें। जी 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 इट वाज ग्रेट वर्क बाय मुबारिस एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। आई थिंक उसमें और थोड़ी बेहतर हो सकती है, अभी भी थोड़े उसमें वो हैं, बट इट्स अ रियली गुड स्टेप। जो इन्वेस्टर साइड पे है, अब यूके में आप देखते हैं EIS SEIS है, so there are actually tax sort of incentives for investing in early stage startups. So जो हम कह रहे हैं कि कैपिटल अभी है इस पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल आप सीरीज ए जाएं, सीरीज बी जाएं, अपने 5-10 मिलियन रेस करने, तो या तो पाकिस्तान का हर वीसी आपके फंड में इन्वेस्ट करेगा या आपका कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी होगा उसमें इन्वॉल्व। तो जो यूके में बहुत सक्सेसफुल रहा था कि जो टैक्स इंसेंटिव्स थे इन इन्वेस्टिंग इन अर्ली स्टेज वेंचर्स, उससे एकदम बहुत बूस्ट आया था इन इन्वेस्टमेंट्स और उससे सक्सेस स्टोरीज भी बहुत आई थी। सो दैट्स नंबर वन। एंड FBR unfortunately I think out of all the regulators थोड़ा सा slow रहा है in reacting. I know उनके अपने चीज़ें हैं, they have their own targets, they have their own priorities, but recently I think they launched the definition of a startup. That's a good start, and I hope they will do that. But from the incentive from the investment side, जो tax incentives होते हैं, I think nothing beats that. आतिफ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पहली बात तो यही कि बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, तो इस वक्त जो रेगुलेटर्स हैं वो सबकी सुन रहे हैं, सब लोगों ने फीडबैक भी दी है। मुबारिस ने बहुत अच्छा काम किया है, उज़ैर ने, काफी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो बहुत आई थिंक कि वो ट्रैक चलते रहना चाहिए, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैपिटल। जब एग्जिट्स होंगी उस वक्त रबर मीट्स द रोड। तो होता ये भी है कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज में कि शुरू में आप फैसिलिटेट करते हैं और जब एग्जिट होती है उस वक्त आपको पता चलता है कि कितना गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू में पोटेंशियली लॉस हो रहा है अगर उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं किया जाता। और मेरी ओपिनियन उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फायदा भी होना चाहिए। तो जितनी ये अपसाइड आएगी कि इकॉनमी मॉडर्नाइज हो रही है, उसमें वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो उसमें एक फेयर शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी हम पब्लिक सर्विसेज बिल्ड करेंगे। तो उस लिहाज से टैक्सेस इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता। आई थिंक कैपिटल आ जाएगा, मार्केट अट्रैक्टिव है। जो मेरे जहन में चीजें हैं कि रेगुलेशंस बेहतर होती रहें, और सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो चीजें बेहतरी आई हैं वो अब रिग्रेस नहीं करनी चाहिए। राइट, 2015 तक कुछ भी नहीं हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। आपके बाकी सारे लॉज बुक पे ठीक भी होते तो भी कुछ नहीं होना था क्योंकि काफी बुरी सिचुएशन थी। तो उन चीजों पर रिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो वो चलते रहना चाहिए। अब जिस तरह से रिसेंट रेगुलेशन हुई है कि बैंक अकाउंट्स कंपनीज के लिए खोले जा सकते हैं ऑनलाइन विदाउट रिक्वायरिंग सर्टिफाइड कॉपीज, और उन पे आप ठप्पे लगवाएं, चक्कर लगाएं, उससे एफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। तो उसी तरह से सारी जो बिजनेस की डील्स हैं कि आप बिल्स कैसे पे करते हैं, आपके टैक्सेस, आपको आके कोई तंग ना करे, तो वो उसका सारा फोकस स्टार्टअप्स होना चाहिए, वीसीज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो स्टार्टअप्स के आउटकम्स ज्यादा बेहतर होंगी, ज्यादा एफिशिएंट होंगे, और वीसीज भी इंडायरेक्टली उसी से ही बेनिफिट करेंगे। इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखें, हिस्टोरिकली हुआ ये कि इंसेंटिव्स उनको दिए गए, उन कंपनीज को दिए गए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे बेसिकली डूइंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। मगर जो डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसमें गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं देख रही थी। तो ये एक चेंज आया है। आई थिंक there's a mental change that's come about where people are really seeing that technology can solve a lot of our problems, domestic problems, right? So I think that's a positive step. And I also feel that if you Pakistanis ka track record dekhen in the global space, and I'm sure Aatif can talk about this, having spent time in Silicon Valley, of course, मैं भी उधर काफी अरसे रहा हूँ, कि जैसे LED की आपने बात की कि they've been super successful
successful. Pakistanis in the global ecosystem have been super successful. But domestic जो हमारे हैं, उसके अंदर obviously shortfalls हैं. जब आपका focus आएगा कि हाँ यार ये हमारी companies can solve our domestic issues as well, and we should be giving them incentives to be able to do so, I think that will have a huge impact. And I think to a certain extent that's happening. So I'd just like to request if there are any questions from the audience, and if the NIC team can also check, we might have some on Facebook maybe. We'll use the last few minutes to take any questions from the audience. But I think Azfar, ji. Azfar? Yes, can you hear me? Ji. Okay, my question is that I want to know the exact reason why we are not seeing things happening in a very good pace. Like we don't hear much news about that this got EVC, one got funding and things like that. We hear like in a month or 3 or 4 cases in a year. So is it because of there are lack of potential startups coming in the space, or it is because that we have limited VCs? Or is this because VCs don't have much fund available? Or is it about ecosystem? I don't want to give the fourth option, the ecosystem, because I think that everyone will select that one. But anyway, what is the main reason why we are not hearing much news is about someone get funding or something? Few like that? deals. What is it? Yeah. Why there are few deals? Anyone? आपने जो सारे के मतलब it's like a mixture of all of that, right? हमेशा वो होता है. But I think like one particular thing that we can look at and we're like we can try to improve is कि यहाँ पे early stage, and I'm talking early, यहाँ पे सारे मतलब early stage funds हैं. But early stage when we're talking about like pre-seed, जो angel rounds होते हैं, आप वो देखेंगे कि वो यहाँ पे उतने फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे होते जितने डेवलप्ड मार्केट्स में हो रहे होते हैं. तो पाइपलाइन इशू ज़रूर है, क्योंकि अगेन बिकॉज द लाइक इकोसिस्टम आपने ऑप्शन नहीं दी, पर इकोसिस्टम क्योंकि अभी फुली मैच्योर नहीं है, तो उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो भी उतने मैच्योर नहीं है, एंड दोज इंक्लूड द फाउंडर्स. तो जो डील्स तो ठीक है, एक वो हो गया कि उतनी डील्स नहीं आ रही, लेकिन जब कोई आती भी है ना, टू रीच द VC स्टेज जो पाकिस्तान में है, ज़्यादातर आर स्लॉटेड इन टू दैट 150 200 प्लस प्री सीरीज ए एंड बियॉन्ड. तो जो अब रिसेंटली कोई बड़ी सीड डील्स हुए हैं विच इज़ रियली नाइस, लेकिन जो ओनली लाइक 100% एंजल राउंड्स होते हैं शुरू में, तो 50,000 60,000 70,000, वहाँ पे फंडिंग नहीं है. तो वहाँ पे एक देयर इज अ लीक इन द पाइपलाइन कि वहाँ तक कोई कंपनी पहुँच भी जाए, अगर वो उसको वहाँ पे नहीं मिलेगी तो वो VC तक नहीं पहुँचेगा. तो आई थिंक उसको अभी कुछ एंजल सिंडिकेट्स बने हैं और बन रहे हैं. एंजल्स की मैच्योरिटी भी एज इकोसिस्टम मैच्योर्स बन रही है. इंटरनेशनल एंजल्स, डायस्पोरा, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग मोर. तो आई थिंक वो भी चीज़ इंप्रूव होगी. पर जो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ डील्स की बात करें, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डील्स तो अर्ली, जितना अर्ली होता है उतना होना चाहिए, और वहाँ पे थोड़ी सी फंडिंग है. तो पाइपलाइन ज़रूर उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इतने आ रहे हों जो VC लेवल तक पहुँच सके, पर जो आते भी हैं वो बीच में दे कैन फॉल ऑफ बिकॉज उनको वो शुरू में कैपिटल नहीं मिलता टू गेट टू दैट प्री सीरीज ए. रवि, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Sorry, it was एक perspective ये भी था कि I think on a relative basis अगर आप देखें compared to 2019 and 2020 and now what we expect in 2021, actually बहुत increase हुआ. So I would maybe slightly respectfully disagree with this notion कि announcements नहीं हो रही या पता नहीं चल रहा. Actually अब हर company that is getting started up won't be able to get funding, and it is a highly selective process as well, and it's a very tough process, as Aatif was also mentioning in the comment. कि जो आपने एक वो बेस करना है अपनी assessment, you should see कि how much capital now is available to be deployed Pakistan की market में compared to 2 years ago, and it is like a monumental shift. और वो invest तो होना है कभी. Now it's not going to go like the month that your fund closes, आपका वो पूरा fund उसी महीने invest होगा. No, actually it needs to be done in a structured way, and you need to also be able to support वो तरह के businesses जिनको आप back कर रहे हैं with other things other than capital as well, because काफी ज़्यादा चीजें होती हैं जो शुरू में आपको address करनी होती हैं. So if the focus is on finding a reason कि जी किस वजह से नहीं मिल रही, तो उस तरह तो बड़ी ज़्यादा
reasons मिल जाएंगे. पर मैं वो maybe sounds cliche, but finally we can say maybe the Pakistani startup ecosystem has 99 problems, but lack of funding is not one, right? So I think right now there's plenty of funding. जो अच्छे startups हैं उनको मिल रहा है, वो उसके बाद जब demonstrate कर रहे हैं उसके बाद progress उनको फिर और follow on funding भी मिल रही है. So as long as the focus is on the right thing, जिस तरह पहले अर्शद ने भी बात की और पैनलिस्ट ने बात की, असली प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके अंदर रियलाइज करें कि वो क्यों नहीं पहले सॉल्व हुई और क्या आपको इनोवेशन लानी है टू सॉल्व दैट. उस चीज की एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं टू फंड दैट. अगर आपका एक वो साइड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाह रहे और एक आप देखना चाह रहे हैं कि जी एक ऐप साइड पे चलेगी कि नहीं, उसके लिए फंडिंग आई डोंट थिंक इस पैनल पे से कोई भी देने को रेडी होगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी डिफरेंट proposition और वो luxury हमारे पास अभी नहीं है as an ecosystem. And just Asfar, I'd like to address a question that came on the chat from Hassan, who's asking how VCs see incubators and or the startups in the incubators. So दो चीजें, एक तो our sister company Invest to Innovate did a ecosystem study that they released in 2019, and we actually surveyed a lot of the current investors at the time, and there was a pattern that we saw, which is where I think the general feedback was that incubators and accelerators need to do more, and that a lot of times that the startups graduating from these programs were not seen as being investment ready enough. So this was a year and a half ago. Obviously COVID year has been different for everybody, but we're here now, a year and a half later. I think personally I can say that what we've seen is a definite improvement in the general maturity and the approaches that startup founders are taking. I think that definitely goes for the incubators as well. What we've seen is a little bit of a raising of the bar in terms of the kinds of exposure that the startup founders are getting via these incubators, but also the quality of the founders that we're seeing. So most of us participated in the in the sort of office hours last week with NIC Islamabad, and I think it was a global program. And I would have to say that I was actually really impressed with the general level of the startup pitches that were done. And if I compare them to what the situation was like a year and a half ago, kafi fark aaya hai. So I think there's definitely an improvement. A lot of us do look at these incubators as a source of pipeline, but I think what we've also expected is to see an improvement in the investment readiness of those startups. So if having a good idea is not enough, you need to actually be in a situation where you are able to absorb investment and able to present to an investor. And of course, we go back to the first question, which is, if you are VC ready or not. That's a whole other question in terms of your your own startup and the opportunity. Another question just really quickly is around check sizes that Salim is asking. I think what we started to see in the last year and a half is a definite increase in not only the types of companies, the number of companies, and the quality of companies, but also the sizes of rounds. So we're starting to see, where seed rounds in Pakistan used to be $200,000, now we're seeing between 500 to $1 million and more. I think what's important is, like Aatif said right in the beginning, don't just focus कि किसी एक ने $1 million raise किए तो हमारा seed round तो $1 million भी होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं. I think you have to look at your space, your own sort of vertical, and also how much you need. Like some companies may be more capital efficient, than others. And so just because you're operating in a certain space doesn't mean that you have to raise a certain amount of money. So I'll stop talking there, but those were a couple of the questions that came through on the. Thank you. I think so. We are done with our time. Ali ने दोबारा join किया. अगर Ali quickly अपना feedback दे दें. I'm going to interrupt here. As far Aatif has to sign out, so if we can just do a quick report and then we'll resume the Q&A. So is the NIC team going to take it? Because I'm not. Yes. NIC team is. Daniel is going to do that. Daniel. Hello, yeah, sorry, Sana. Could you come again, please? I think my internet got disconnected. You need to take your. We're all still for a photograph right about now, so. Okay, so whenever everybody is ready, just let me know. We are ready. Okay, great.
And we're done. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. So Asfar, would you like to direct the questions to Ali, who is he's joined again? Yes. So Ali, we discussed about the market potential, VCs के issues and the regulators. और अभी incubators की भी बात आई and how we need to improve and we have improved over the time. Misbah ने जैसे बताया और आप लोग कहते हैं. आपके ज़हन में since you're part of a large group जो कि conventional business में बहुत अरसे से था, बहुत successful group था. आप इस स्पेस को आपने बड़े क्लोजली देखा है between these tech businesses which are scalable and high growth and a big business जो कि agriculture related है और खास तौर पे agri market में जहां हम tech की बात भी कम कर रहे होते हैं. आपने इनमें क्या similarities देखी and what we can learn, the tech space can learn from the businesses that are in the market for some time and आपकी इसमें feedback. So I think overall, I think I made my first investment in Pakistan at the seed stage 2015, early 2015. I think internet users तब मुझे अगर याद है तो it was close to 25 million internet users. And then we made 2016 में two more investments and 2017 में about two more. So it was more of a a pilot for our group. This was Fatima Ventures, and then we were the only single LP into that, right? And in that process, what we saw is adoption metrics for in total we made 6 investments of the 5. One didn't plan out. 5 others were very similar to what you would expect of a developed ecosystem, growing ecosystem. And at the time when we felt the raising the next round of funding made sense for the company, they went out in the market, and then there was no VC funds available, no angels available, no corporates available to really pitch to global funds at the time. Maybe had an opportunistic one-off investment view of Pakistan, but nothing really serious. And what's changed is that out of those 5 initial investments that we made, 3 raised their follow-on funding within 2020, right? So just the availability of capital, right? Of the previous 5, if the ecosystem was mature, they would have raised that sooner. But now, I think 2 things have changed. Access to capital is increasing, but time between each successive funding round is also decreasing, right? So you're able to quickly grow, raise the next round. At least that's been tested up till Series B, and now some of the companies will test the Series B threshold hopefully within this year. So availability of capital from then to now, I think, is a lot better, which means it's a much better time to be an entrepreneur today than it was back then. I think the other thing that changed is when we invested, obviously there were 25 million internet users to now, I think we have 93 million 3G, 4G users, right? So that is a big change. So what meant is that, companies that were starting off then, for them to achieve the same level of growth, you would have to invest a lot more than you have to today, right? And for some cases, it was even perhaps too early to launch back then than it is today, right? So I think timing of what you're pursuing and when you're pursuing it is extremely important, and I think where we are in the evolution. So that makes sense. A lot of the fintechs that were launching back in 2015, there was both from a regulatory standpoint, from an infrastructure standpoint, it was a much more expensive exercise
than it is today, and then you're seeing that in terms of user adoption, in terms of growth metrics within the fintech sector, for example. Right. Then if I compare, traditional businesses taking a leap into funding startups back then to now, I think a lot has changed, both in terms of direct investments and in terms of taking exposure through VC funds, right? So in our case, we have maybe some of the from the top 10, maybe 5 largest local groups that are invested into the fund. But they're not just invested through our fund; they're also, asking for co-investment rights where they want to also take direct exposures. So that wasn't the case in 2015. But fundamentally, I think in terms of now your other question of how you compare traditional businesses to startup businesses, I think we from day one decided, these two businesses require a different set of culture. So they have to be managed in a very different environment, and that's why we sort of have that separation. So I think it's important to know, the sector you're in. Even within our group, if we look at it, we're in maybe 5 different sectors, which include fertilizer, textiles, sugar. And even within those, within a single group, we have, different sets of policies, different governing structures, But the core principles, I would say, are extremely important, right? So in all of this, there's no substitute for hard work. You need to have the right operating frameworks. You need the right funding plan. You need the right, market strategy. So some of those core principles can apply, but then how you apply them operationally are very, very different, between the startup world and then the manufacturing world. So from day one, we were very sure to create that separation. But at the same time, we did feel that having support from traditional businesses to startups can be valuable, right? It can create a perfect environment within the infrastructure for startups to pilot, right? At the end, traditional businesses are also an organism of needs that you have. For example, in our LP pool, we have over 100,000 employees within Pakistan, and now these employees can be a perfect sort of a pilot for any startup, right? Whether and different sectors, whether it's fintech, whether it's logistics, etc. But just of time, I'm going to have to sort of conclude here. We do have some questions in the chat box, but I'm sorry that due to shortage of time, we won't be able to take those. However, most of the startups who registered for the office hours hosted by NIC Karachi will get a chance to talk to these investors directly and take these concerns up. Just some closing notes, throughout this discussion, we had some really powerful sort of venture capitalists sitting in here, sharing their insights, sharing their learning, especially from a local perspective, which is very relevant to all the startups who joined in here today. So really understand what you're getting into when you bring in outside money, when you're ready to bring in outside money. And you really need to know, how VCs are motivated. And because when you make this economic arrangement, it's not just, you're not just committing to a technology, you're not committing to a dream that you've dreamt of as an entrepreneur. You're committing to real targets, you're committing to real milestones, and that's how it has to be. I'd just like to thank all the panelists who've joined us here today. And of course, a big thank you to NIC Karachi for having us and arranging this session. Asfar, if you'd just like to make a quick closing comment as we close. Thank you once again. Thank you, everyone. Thank you to the all 6 panelists. And we look forward to your participation and your company's participation in our Investor Summit on the 5th, inshallah. And thank you for your support, and thank you and goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.